Hello, we are back again with the new live stream. What's up? No, sorry, I need to check YouTube. Hello, we are back again. Okay, my voice is clear. Let me do today's problem of the day. Where is the Chrome? Yeah. So this problem I have not solved it. Let's see. 1339 problem. Maximum product of splitted binary tree. Okay, something we're going to split the binary tree into two. Given the root of a binary tree, split the binary tree into two subtrees by removing one edge such that the product of the sum of the trees is maximized. Given root of binary tree, split the binary tree into two subtrees by removing one edge such that the product of the sum of the subtrees is maximized. Okay, return the maximum product of the sums of the two subtrees. Return the maximum. Since the answer may be too large, return modulo 10 power 9 plus 7. Okay, we are going to mod it. Product may be and can exceed long or integer range. You need to maximize the answer before taking the mod. And not after taking that. Before taking the mod and not after taking it. Okay. First we need to maximize the answer, then we have to mod it. Let's see the example. We are given this binary tree. 1 has a root, 2 and 3 child, and 4 and 5 of the child. So maximum product is 110. Okay. We need to check all the possibles. The number of nodes is 10 to the power 4. 10 to the power 4 into 10 to the power 8. Okay, and the values nodes are into 5 into 10 to the power 4 and values are 10 to the power 4. Okay, there are no negatives. That's good. Let's see. Let's try to where is our let's erase this. Okay. Let's see the one example. 1, 2, 3, 4 and 5. We will remove one. Every time we will remove an edge and compute the sum, right? One tree will be 1, 3 and 6. Other will be 2, 4, 5. Okay, and if we split between 2 and 4, the tree will look like 1, 2, 3, 5 and 6, and there is a 4. And if we split and 1 and 3
2 4 5 and 3 and 6. I need to compute the left subtree and right subtrees, right? Some of those. How I am going to do it? Every time there are n minus 1 edges, 6 nodes, 1 2 3 4 5. Fine, n minus 1 edges. Every time I pick any edge and chop it and compute the sum. Okay, since a binary tree I cannot go back, so there is no address. I have to use recursion. Okay, first I will compute all the sums, right? All the sum up to that node. 1 2 3. This will be our optimization. 5 and 6. Compute the sum. 4 is from the root. This 4 is the sum. For 5 is the sum. For 2, sum is 2 plus 4 plus 5. That is 9 11. And for 3 is 6. 3 plus 3 plus 6 is 9. And for 1, the sum is 1 plus 11 plus 9. It's 20 21 sum is. And if I split here, I have the sum of the left tree and the right tree. I also have it. First I will subtract the left subtree from 21. That will be around 10, and multiply it to around 10. This will work. First I will for in order of n, I will compute sum of subtrees. Store it in a map, and in another iteration in O of n, I will split it into 2. Okay, let's try this. Think we need to make a global hash map. Hash map of tree node and a long map, and we need a static mod, int long mod up to 10 to the power 9 plus 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 7. We are going to use this mod. Return it mod 10 to the power 9 plus 7. But we need to maximize the answer before taking the mod. If the sums are way closer, the product is maximum, right? This is an dilemma I think we have here. 10 to 9 1 2 3 3 6. For a smaller mod, maybe it is maximum, but due to the reason of 10 to the power 9 plus 7 modding it, we are creating the answer to be smaller. Oh
Shit, what happened? First we are not going to mod, I think. Let's assume that product, what is a product? If we took the whole trees, product of whole tree, the 10 to the power 4 nodes and value to 5 into 10 to the power 4 and value is 10 to the power 4. It's 10 to the power 8. No. Tree number of nodes is 5 into 10 to the power 4 and every node is 10 to the power 4. 8. 5 into 10 to the power 8. Into 10 to the power 8. If the project is somewhere around, if we split it in half, 10 to the power 4 into 10 to the power 10 to the power 8, 10 to the power 8, 12, long. If we are storing the long and max, enter static long max product equal to 0. We are returning mod product max product, right? Product mod and turn it into 8. So it's long, and here I made a mistake. Max product, declaring the max all the static variable to fresh new, and map is equal to new hash match. And we are going to recursively long recursive sum, and we have a tree node current. If current equal to null, we are going to return 0 sum, else dot left equal to null, or when we hit a root or a leaf, we're going to return we are going to return the current value. And we are going to store it in a, before returning we need to store it in a hash map. Map dot put current current dot value. Now current sum will be this. Will let me make it a long equal to long of current dot value, else we are going to sum the left sum plus right sum. Let's recursive sum of left tree, left, recursive sum of current dot right. If current equal null, return 0. We are not going to store it in a map cause it is a null node. Now we are going to store it in a map dot put what is the current current sum,
and return the sum. Let's call here recursive sum of root. Now we have computed all the max product. We are not returning anything. Void calculate max split for tree node current. We are going to either cut to left or right, or else go to left, or either cut or go. Either we cut the left tree or go or left edge or right edge. If we are not cutting any edge, we are going to go either to left or right and do the same thing. If current equal to null, return now what is the current product. Let it be 0. Okay, we don't have a 1. If left is not equal to none, current left is not equal to null, then we either cut the left. Then what should be left product? Left product equal to 0. Then we are going to update the left product to be from the map.get current.left. If now current not equal left, then we are subtracting from the long of head product equal to map.get current minus left product. Now we need to update the max product, right? Max product equal to max of max product comma left product times head product. We are going to do it for the right node. Current.right not equal to null. Long of right product get current.right. Long of head product equal to map.get current minus right product, and update the max product. Right head product times right product. And we are going to either go to left, calculate max split, go to the current.left, or calculate max product
of current dot right. Go to the right. Do we need to pass any other thing? I think we need to pass the either of the left subtree sum. If we're going to the left, I need to pass the right sum. Because we are doing recursively, the current left should be updated, right? Comma. Further left. Comma tree along of current. What is the past sum? Pass sum. We are going to pass sum. For the left tree, we are going to the pass sum of the right, or the current dot map dot get current dot left minus map dot get product or get head current node, right? Here we are going to pass map dot get current minus get current dot we are going to left. We need to pass the current node and left node, and here right. Yeah, this is very interesting problem, and we are current dot left not equal to null. If current dot right not equal to null, let me place the proper spacing. It's difficult to read here. And we are adding to the pass sum. Max split and we are going to calculate max split for root comma 0. I'll pass along. Oh yeah. Why can't you? Okay, product is a max product. Yeah.
Right? Oh yeah, it's you need to use brackets, or else max product is going to be converted into a int before it's going to mod it. I think let's use some test cases for our own. Let's do it. Let's submit it and check it. We're getting a wrong answer. 32 cases passed. But for this, what I can do? What I can do, bro? Use this test case. Such a long as. Click to it. Data is too large to display. What I can do for this test case? Expected, I'll see the output. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I could have expected to be larger than that. Current dot left, current dot right, current sum, current sum. I'm using it correctly. Null. We're going to the left side. Up. So I subtracted from the left subtree sum so that I get the correct part from the right side. Current dot left, current dot right. I'm using it correctly. I'm not modding it anyway. Hash map tree node long map. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Using the mod correctly, I think. Okay, what's the problem, brother? Yeah. Still getting this wrong.
You need to maximize the answer before taking the mod, not after taking the. I got it. Got it. Still, it passed so many test cases. 37 out of 54. Think I'm on the right track. I need to be careful where I'm splitting or not. Long math product. Depth first search, binary trees. I'm using long. Am I converting it to long before storing? Yes. Current dot val, long recursive left, recursive right. Current sum returning correctly. Am I passing the pass sum to be wrong? No. Pass sum, I think pass sum is mandatory here, won't you think? Still don't know what 64900. I could go more. Let's see the hint. If we know the sum of subtree, then the total, and this we can do. I think we have done here wrong. Anywhere, let's store it the total sum. Let's store the total sum. Long tot sum. Let's pass the tot sum here. Pass sum, we are only going to use pass sum here. Minus left product. We are not going to pass anything here. We are just passing the tot sum. Oh, I think I made here wrong. Shit. Let me copy. I didn't pass the tot sum. Shit. This was good. I got my mistake. I need to pass the pass sum here too. I forgot to pass some. Pass. I forgot to pass the pass sum. Yep. So I submit it. Yes. Yeah.
This is very bad shit. I'm not using this screenshot. This was a good question, man. Recursive dynamic kind of dynamic programming. Set a photo calculation. This was a good recursive problem. Let's analyze the complexity. Let's say SSO of 1. I was solving yesterday some problems. Let's do the minimum number of operations to have distinct elements. You're given an integer nums. In one operation, you remove the first 3 elements. If there are fewer than 3 elements, all the remaining elements are removed. Repeat this process until empty. Okay. Total operations to have distinct all 3. This is good. First, we are going to use an hash map. Hash map of integer comma integer map is equal to new hash map for int value int v in nums map dot put v comma map dot get or default. Now int size total operations comma size of duplicate values, right? And duplicate values should be equal to the size of the hash map, right? Size is nums.length. While size is greater than 0 and map dot size not equal to size of elements, number of elements we have removed. And we need a pointer, right? Every time we are going to greater than equal to 3 and pointer for I. Every time we are going to remove I 0 first element, second element, third element of the current map dot put nums of I comma nums map dot get nums of I minus nums of I, and we are going to subtract it by 1 minus 1. Map dot put nums of I plus 1 map dot get I plus 1 comma minus 1 map dot put nums of I plus 2 comma map dot get nums of I plus 2 minus 1. If map dot get nums of I equal to 0, map dot remove I get nums of plus 1.
I'm removing the wrong. I don't need to remove the I need to remove the ith value. Cancel. And map dot. I plus 2, updating the I, subtract the size by 2, 3. And if size is less than 3, then we are going to increase the one operation and return the operation. OPP plus plus. We are doing an operation here. It's producing an error. Null pointer exception. Why? If map dot get nums of I equal to 0, we are removing nums of I. If map dot contains nums of I, I'm doing correctly, but why is it invoking a null value? Cannot is null. Contains let me 1 2 3 4 5 6. Size is 6 currently, operation is 0. As size of is not equal to 3, not equal to 6 is not equal to the hash map size, right? So we are removing first 3 values. So now the array become size less than size of the map will be 3, and
The size of the array is also 3. Then it should break. Map dot contains nums of I. If doesn't contains, then don't do that, right? I plus 1, I plus 2 are correct index. Let me print for system dot pair. What is the I plus 1? 1, right? 1, 8, 8 is map dot get nums of I. Map dot get nums of I. Is null. How is it null, man? Map dot get or default we are. How is it wrong? Null, yeah, that's why I did map dot contains. Nums of I plus 1. Object is null. Why? Three 8 3 6 5 8 8 5 8. Yeah, I got it. This is correct. Why I'm not getting? If map dot get. Oh, okay, I made mistake here, I think. Get
very silly mistake out of bracket. Again bracket. If size is if size is greater than 1 and then size is less than 3, I think then we should. No, again I made mistake. Size greater than 1. I very much suck at this contest. Maximum sum of 3 number divisible by 3. Your task is to, oh god, you are given an addition. So that the sum is divisible by 3. PQ of 0. Hello boy Shikar, how are you? Solve some problems with should I use a priority queue or use an array list? Let's got a new array list. A list of zeros. New
बोला मेरे को शिकारित कौन Max sum, right? Max. Now either we if now sorting color sort L0 by collection dot order L1 with F okay. Now if we take two ones and do we need can we pair 2 and 1? Can we pair हेलो हाँ बोलो बोलूं? हाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? हाँ क्या है प्रॉब्लम, क्या है? ये अभी मैं आ रहा हूँ, प्रॉब्लम से ही आ रहा हूँ। थ्री ये खोल ले 3780 हाँ वही बोल रहा हूँ, नेट पर मैं देखूँ वही बोल 6 नहीं बोल रहा। 2 1 3 and 0
ऑफिस चल रहा है मेरा। ऑफिस चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। हाँ भाई, ठंड इतनी बढ़ गई भाई, क्या बोलूँ मैं। भाई यहाँ पे पड़ रही है, जोधपुर में नहीं है। हैं? मैं दोस्त बता रहे धूप निकली थी, यहाँ तो सूरज ही नहीं दिखा मुझे 2 दिन से। ऐसा हाथ ठंडे पड़ रहे हैं भाई, क्या बोलूं। और क्या भाई, वहां उधर तब भी काम कर लेता है, यहाँ से मुझसे हाथ ही नहीं निकल पा रहा। कीबोर्ड एक जेब में डाला, एक माउस पे ग्लव्स पहन के रखा हुआ, कीबोर्ड पे हाथ ही नहीं रखा जा रहा। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। हो, ये तो कल का है। नहीं आज का है ये, द प्रॉब्लम ऑफ द डे है। मैं तो अभी कॉन्टेस्ट का वो दे रहा था। कॉन्टेस्ट कर रहा है क्या? हाँ। वो कॉन्टेस्ट चल रहा है इस समय? नहीं, मैं तो वो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ प्रीवियस। कल मैंने रात में देख लिए थे ये प्रॉब्लम क्या है, इजी थे, मतलब ये स्ट्रेन था। हाँ, आज की नहीं जो अभी कर रहा हूँ ना, जो प्रॉब्लम ऑफ द डे तो पहले कर लिया था। अच्छा। हाँ। प्रॉब्लम ऑफ द डे भी अच्छा है भाई, तू कर। लो क्या होता है भाई, L0 होता है। मैंने तो कल की भी देखनी पड़ेगी एक बार दोबारा। कल की मैंने जल्दी कर दी, थोड़ी जल्दी, मतलब थोड़ी जल्दी। सही है यार। कल का तो याद भी नहीं है, कल का क्या था। अरे यार, अरे बाइनरी ट्री में बीएफएस पे मैक्सिमम निकालना है, हाँ कौन सी हाँ लेवल पर मैक्सिमम सम आएगा। मुझे ट्री पे कोड रन करना नहीं आता ना, हाँ। इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। रिवर्स ऑर्डर नहीं डलता क्या? अबे यार स्पेलिंग मिस्टेक ही कर देता हूँ मैं। मिस्टेक तो छोटी चीज है, मैं तो लॉजिक मिस्टेक एक हमारी कोचिंग में बंदा आता था, वो कहता था कि सर समथिंग इज रिटन ऑन बुक, व्हाई शुड वी राइट इट ऑन नोटबुक। सही तो कह रहा है भाई। सर नोट लिखवा देते। हाँ, नोट नोट्स लिखवा रहे, बीच में बोल रहे हैं भाई, इतनी जोर के हंसे सब। बात तो सेम है, पर भाई तो पूरी किताब थोड़ी पढ़ सकता है, तो नोट्स पढ़ सकता है, मतलब पढ़ सकता है तो वैसे तो पढ़ ले मतलब। अरे वो करता था, वो थोड़ा अजीब था, अलग तरीके का। अपना जैसे था ना वो, हाँ। रितेश। अबे क्यों याद दिला दिया। अरे यार, तेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड तेरा, सौरभ का बेस्ट फ्रेंड था। मुझसे तो ठीक से बात करता था। एक बार तो अपन ने उसका पूरा परिचय ले लिया था कि कह रहा शादी भी करूंगा, पेड़ बचाऊंगा। हैं? याद नहीं है, ऊपर खड़े होकर बात कर रहे थे अपन लोग। पेड़ कैसे बचाएगा, पेड़ के साथ शादी ना करके? फिर पेड़ लगाएगा, पता नहीं, शायद शादी नहीं करेगा, 2 बच्चे नहीं करेगा। हाँ सही है। ऑक्सीजन नहीं देगा तो बीवी तो फिर भी जिंदा रहे, मतलब कोई लड़की जिससे होती शादी, वो तो फिर भी जिंदा रहेगी। यस। तुम तो देखेगी। Given the root of a plant, the level of its root value मतलब
COLLE. तेरे खातिर। अरे हिंदी सॉन्ग्स यार भाई ये क्या दिक्कत है भाई? कलेक्शन COLLECTIONS। कोड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैंने सॉर्ट कर रहा हूँ भाई कलेक्शन। क्यू कॉन्स्ट क्यू भाई एक तो भाई ये मैं कहीं पे अपने टैब पे कोड कर रहा हूँ ना भाई, दिखते भी नहीं है। टैब पे करता है तू यार कोड? हाँ मैंने देख टैब पे टाइप कैसे करता है? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड कैसे कनेक्ट किया? ब्लूटूथ? यस। ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड है? हाँ अभी लिया है दीदी को भीख मांग के। सही है। वो 800 में आ गया था, बढ़िया है ना? हाँ भैया बढ़िया है। बढ़िया। हाँ भाई मैंने कल एक का कोड लिख लिया, अब मुझे उसका कोड ही नहीं समझ में आ रहा। उसने बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है भाई। मतलब मेरे को लॉजिक पता है इसका क्वेश्चन का, पर ये कोड जैसे चल रहा है वो नहीं पता। भाई बैचेस में करा होगा ना उसने, साइज एक वेरिएबल बनाया होगा, लूप क्यों बनाई होगी। हाँ एक मैक्स लेवल बनाया अभी जो है, एक मैक्सम। अरे मैं कल वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। एक रूट को क्यू में ले लिया उसने। अरे रूट को इसने पहले एरे में क्यों लिया? एरे के अंदर डाल के क्यू में ले लिया। मतलब देख रूट तो पूरी की पूरी एक एरे आई होगी ना उससे। रूट क्या होती है? अबे रूट को अभी एरे की तरह मत लेना उसमें, वो रूट को तो बस एक रूट array की है तरह एक ही सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अभी अभी के लिए क्या? यार नॉट सुटेबल पर सारे कबरेल ऑब्जेक्ट इंटर सिंगल वैल्यू लेंगे तो फिर क्यू डॉट लेंथ तो ये हो जाएगा ना, फिर क्यू डॉट लेंथ तो क्यू डॉट लेंथ तो 1 ही हो जाएगा हमेशा। रुक जा यार, क्यू डॉट लेंथ तो 1 नहीं होगा, फिर उसके बाद उसको अभी एक सिंगल वैल्यू की तरह फिर अब उसको लेफ्ट और राइट जाएंगे इसके। अच्छा एक बार लेफ्ट गया एक बार राइट गया, मतलब वो दोनों एक ही लेवल के है ना होंगे तो अगर नोड में इसने क्यू डॉट आई करा। ओ क्यू मतलब ब्रैकेट में आई। अरे यार मेरी गांड तोड़ो भाई तुम पहले। ये करने की क्या जरूरत थी? तो हमें वो एक अलग से स्टोर नहीं करना पड़ेगा कि ये इस लेवल पे आया हूँ मैं और ये इस लेवल का है। अच्छा अब हम बैचेस की तरफ वो ट्रीट कर लिए कि अब ये साइज़ का है तो ये जो भी एलिमेंट्स होंगे ना पहले के जो भी साइज़ का, तो वो सेम बैच में आएंगे, तो वो सेम बैच में आएंगे तो वो सेम लेवल पे होंगे ऐसे। सब ऊपर से गया मैं, छोड़ अभी 2 सेकंड रुक। बैच बना दिया। बैचेस की तरह देख, पहला बैच दूसरा बैच तीसरा बैच। सब नए। अरे यार मेरी गांड तोड़ दो यार कोई। तो स्पेलिंग मिस्टेक ही नहीं पता चली अब तक मेरे को, कहाँ थी स्पेलिंग मिस्टेक। ये भी हो गया। मतलब वो वाले 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32 क्या होता है ये? ये तो पढ़ती है। पहले एलिमेंट होता है 1 फिर 2 फिर उसके बाद 4। हाँ 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 ये सही है। एट मैक्स एक लेवल पे 2 की पावर n-1 लेवल, मतलब वो नोड्स हो सकते हैं ऐसे। हाँ तो बैचेस तो उसी को तो बोल रहा है। हाँ बैचेस को वही बोल रहा हूँ, वो लेवल के जो भी नोड्स होंगे वो लेवल सारे एक बैच में आ जाएंगे। हाँ ये कैसे हो जा रहा है बैच ये करने से? मैक्सिमम। भाई
Okay, you're given an integer array of nums of length n and one string of same. तेरे दोस्त की जो स्विगी की लगी थी कितने का लगा पैकेज? स्विगी? हाँ नहीं, पैकेज नहीं पूछा मैंने, मेरे को लगा पैकेज पूछना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, ये तो भाई मेरे भी होती है। ठीक है भाई, लग गया तो बढ़िया ही लगा होगा, लेकिन यार स्विगी में एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लगाया। सही है। एक बंदे ने, क्योंकि वो लेट कोड पे ही वो होता है कि एक बंदे ने भी एसोसिएट का भी पोस्ट किया था एनोनिमस। हाँ, मतलब इधर पोस्ट होते हैं यहाँ पे। एक बंदा एनोनिमसली पूछा है कि स्विगी का 17 लाख का पैकेज है मेरा। हाँ, तो अच्छा। इसके कुछ तो मैं बोला कि भाई तेरे को भी भेजता हूँ मैं, तो ये बता इसको सेंड करके, ये तेरा है? वो भेज दे मैं उसको बोलूँगा। हाँ, उसे पता चल जाएगा मुझे। अरे मेरे को क्वेश्चन समझ में आया अब। सर्च करता हूँ, रुक जा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ड्राई रन करना सीखना ही पड़ेगा यार, बिना ड्राई रन करे आधी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। अभी वो हट गया लग रहा है, मतलब अभी दिख नहीं रहा। और डिस्कशन में देखते हैं, डिस्कशन में तो एक ही दिन में इतने सारे पोस्ट हो जाते हैं ना। इन्फोसिस ऑफर लेटर, स्ट्राइवर, डेवऑप्स का। डेवऑप्स कहाँ से आ जाएगा? हाँ, ऑफर नेगोशिएशन मिल गया रुक जा। इसका है 16 लाख का बेस। रुक जा, इसको भेज दूँ तेरे को, पास करता हूँ। व्हाट्सएप ही करना है ना? कान्हा को सेंड कर रहे हैं, तेरे को ही सेंड कर रहा हूँ भाई। तो तेरा नाम तेरे फोन में कान्हा क्यों सेव होगा भाई? मैंने तो सेव कर लिया था ना भाई, इसलिए। तूने कान्हा सेव कर लिया था? हाँ। घर का नाम तुझे किसने बताया? अरे तू मेरी बेटा है, तू मेरे को पता नहीं होगा? उनके लोड़े ऐसी गांठ। दसिया वे सुन मेरी रानी के रानी।
उनके करे अनसुनिया। वो मुझे इसका वो बढ़िया लगा कि तू समझे नादान और फिर वो है होशियारी, पता नहीं क्या था, मस्त पार्ट है। मैं तो ट्यून 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 करता हूँ बस। अब मेरे को भी तो गाना है यार। ट्यू 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 कर रहा हूँ। भाई तेरे को तो समझ भी तो आती है भाई, तो इतने शायरियाँ लिखता है जो ऊपर से जाती है मेरी। वो बैठ जो कुर्सी निकल गई। कुर्सी छेद में से निकल गई। ये बार डेटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बेस्ड थे क्वेश्चंस। देवजी समझ से ससुराल के लाखों जोड़ा है बाबुल का वंदना तापे प्रिया साजा। तो अब देखते हैं रूट क्या है। रूट इतनी पढ़ाई कर लूं मैं, अमर हो जाऊं, अमर अपनी नजरों में। यार एक बार कोई आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई यूज़ करो और जानिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड 7 था और मेरा 8 आया भाई, कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ फिर। तुझे कैसे पता कि मतलब बढ़िया कौन सी डायरेक्शन में? क्लास में फर्स्ट रैंक लाना और 1 नंबर लाना, ये तो पीछे का कि उससे पता चलता है ना। तो कुछ पूछ रहा था। अरे वो प्लस प्लस आई जो होता है वो बाद में बढ़ता है और आई प्लस प्लस अभी के अभी बढ़ जाता है। प्लस प्लस आई तो अभी बढ़ता है, आई प्लस प्लस बाद में बढ़ता है। तो आर बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया अपना। तो कंडीशन चेक होने से पहले ही बढ़ जाता है। हाँ ओह
टू लेवल प्लस लेवल आई तो हुई बनाई अरे यार ओनली हट स्वैप आई प्लस जो होगी हमारी जो टेंथ हुई वो भी वन हो गई कौन ऐसा नहीं करना था क्या? इतनी देर से मैं कुछ इतना चुतियाप लिखा हूँ, पता चल रहा है कि गलत है। कुछ लोग वो चुतियाप लिख के अगले दिन पे चले जाते हैं। आपको पता तो चल रहा है। कहाँ निकल गए सबकी अब एंड लेवल क्या है? इस वाले में प्लस प्लस हो रहा है पैड छोड़ तो भाई साहब ओके तो आई मेरा इस साल मेरा आई क्या है आई अब तक पुरानी आई जी और एंड वन है एक प्लस अभी क्या हो गया ब्लैक 2 है ब्लैक खत्म है ये तो कुछ रही है Okay. अरे लिख क्यों नहीं रहा है पर बंद है क्या? Se avesse solo fosse un veri per io,
तेरी ना जानी अकेला जहानी तेरी रानी सुन सुन मेरी दिल वाली जानी तेरी पहली सुनियो अरे वो उसका क्या हुआ? पेटीएम का दिया था ना। हाँ नहीं, पेटीएम नहीं था वो। अरे यार, पेपाल। किसने दिया भाई? पेटीएम और मैंने नहीं दिया। मेरे दोस्त ने। फोन पे का दिया था ना। मेरे दोस्त ने। हाँ नहीं, वो पेटीएम का ही था और नहीं हुआ। फिर स्विगी का किसका हुआ? स्विगी का तो ये वो थोड़ी है, वो तो मेरे कोचिंग का दोस्त है। अच्छा, रूम वाले का थोड़ी हुआ। रूम वाला तो अभी उसने तो वापस ले लिया अपना रेजिग्नेशन, रुक रहा है वो। हैं? हाँ, उसको कंपनी में सर ने पूछा कि नहीं लगी है तो रुक जाओ। वाह भाई यार, ये सही था भाई तेरा सर का। तो उसने फिर लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि रुक जा रहा हूँ। भाई यार, ये भी हो गया। चलो 3 क्वेश्चन हो गए आज के, 4 हो गए। अरे यार, लॉन्ग यूज़ करना था क्या? बड़ी बड़ी बातें कर रहा भाई, मेरे को भी समझ में आया। लॉन्ग यूज़ करना था, मैं इंटीजर यूज़ करके बैठी। तू जावा नहीं कर रहा है? हाँ, तो किस में कर रहा है? तेरा वहाँ पे टेक्स्ट टैग क्या रहेगा? वो नहीं पता। अच्छा, ठीक है भाई, हो गए 4 क्वेश्चन हो गए आज के। चार से बढ़ा ली अपनी स्ट्रीक। 4 क्वेश्चन से बढ़ गई आज की मेरी। हाँ अरे भाई साहब 800-900 पहुंच गया वो मैं। नहीं, 840 हो गए। 160 दूर है बस। किससे? अच्छा भाई साफ करो। 172। मैं 1000 में देता। मैं साला उतना भी पास नहीं हूँ जितना तू दूर है। कुछ तो मतलब बोल दिया मैंने, समझ में नहीं आया मुझे।
नहीं 86 क्वेश्चन करे भाई मैंने। 86 कर दी इतने दिन में? कितने दिन में? ये मेरे पिछले 4 साल के हैं। मेरी एक बार 2022 की एक स्ट्रीक है, एक महीने के 46 दिनों की, 46 डेज की, वही है बस। उसी में किए थे मैंने जितने किए थे। चल रही 26, ये 86, मेरे को 86 आते नहीं है। कपड़े वाला कब आएगा भाई? कोई तेरी आईडी भेजियो लिंक्डइन की, वो लिंक्डइन लीटकोड की। भेजी तो थी। किधर भेजी थी? आईडी बोल, सर्च करो। अरे बता क्या आईडी बता, लीटकोड आईडी बताता हूँ, रुक जा। मेरे लिंक्डइन पे चले जा। साले ऊपर लिखी हुई है तेरे नाम के सामने। अरे तो वो भेजनी वैसे ही वो शेर का आता नहीं है ना। बोल देना शिवांग यादव है आगे। बस ये देख, एक बार देखने दे यार, करता हूँ मैं। नंबर क्या होगा उसमें? 1201 शिवांग यादव 1201। ये भेज रहा हूँ तेरे को। मिलती कैसे? ऐसे नहीं देख सकते? हाँ वैसे वो अपने वो URL चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मैं तो सर्च में लिख रहा था, क्वेश्चंस की जगह तू आ गया। ऐसे नहीं, 404 होगी। ठीक है, मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ अभी। लिंक भेज, लिंक भेज दिया ना? किस पे भेजा? अरे यार किसको भेजा मैंने? शिट, किस पे भेजा है? किसको भेज गया ये? शो ऑफ कर दिया भाई तूने किसी को तो। डिलीवरी वाला है ना, वो लोकेशन मांग रहा था। अरे उसको तो तू इधर मिल बेटे। किससे लोकेशन मांग रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? मुझे भेज। अब भेज दिया होगा। अब आया। अबे 1201 चला। ओ भाई साहब तेरी 46 क्या भाई? क्या हो गया 40 से? ये 6000 भाई। 46,000 तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रेटिंग, वो कॉन्टेस्ट रेटिंग इम्पोर्टेंट होती है। अरे फिर भी मतलब सिर्फ 46,000 लोगों की के रैंक, मतलब अरे मतलब मेरी देख रहा साले, रुक जा। मेरी क्या इंडिया की पॉपुलेशन 10,000 लाख 10 लाख, मैं 15 लाख पे हूँ। तू 46,000 पे समझ रहा है? बहन चो, अब अगर तुझे 20-25 लाख का पैकेज नहीं लगाया ना तूने, इसके बाद भी तो नहीं लग रही भाई। माता जय माता भाई। 46,000 रैंक, मतलब 46,000 रैंक नहीं, 46,000 रैंक नहीं है भाई, ये है, रैंक नहीं है ये।